Good morning, dear students. Today we are going to start a new chapter, that is chapter number 9 of Civics, Public Facilities. Public means people. Facilities mean that facility has been given to us by the government itself. So publicly जो चीज़ हमें दी जा रही है, जो facilities हमें दी जा रही हैं, we have to discuss the same thing in this chapter. In this chapter we will take one issue, that is of supply of water. With the help of the story, I will explain this chapter to you. That you can see there is a scarcity of water in our country. In any village, you can take an example of any village, you can see the people, those who are carrying water from 2 to 3 kilometers away. You can see the pictures, how many pots are there, and they are waiting for their turn to getting a pot of water. So let us begin with the chapter that will be in the story. Public facility. ठीक है, these are the Ammu and Kumar. Ammu and Kumar are traveling through Chennai in a bus. As they go round the city, they observe the water facilities available in different parts of Chennai. When you are visiting at some place, you have to be observe so many things. So here the Ammu and Kumar, they are also visiting and they are watching different facilities at different places. So first they have watched the राम गोपाल. अब राम गोपाल कौन थे बेटा? ये ऑफिसर से, रिटायर्ड ऑफिसर से. यू कैन सी ये पाइप लगा के कितने ईजिली कार को वॉश कर रहे हैं. दे आर वेस्टिंग द वाटर बिकॉज दे आर गेटिंग दिस मच ऑफ फैसिलिटी वेरी ईजिली. अगर इनके घर वाटर की कोई कभी कमी आती है तो इमीडिएटली, बिकॉज ही वॉज अ रिटायर्ड ऑफिसर, तो ही मेड ए कॉल एंड इमीडिएटली द वाटर सप्लाई हैज़ बीन डन फॉर देयर हाउसेज. नेक्स्ट पिक्चर यू कैन सी the Padma, the said pet, they are suffering for the water scarcity. कितने बर्तन उन्होंने इकट्ठे किए and they are not getting the water. And she is the domestic worker. She is living in a slum area where there is a shortage of water. So we come to the next, that is the Annapakam. You can see here is the room and you can see the bottles of water here. They have to purchase the drinking water itself. Shiva wanted to accompany with his family, but he is unable to do that because of lack of water. If they will come along with him, then there is an increase of the shortage of water, as he has to be purchased water for their drinking purposes also. So here you can see the shortage of water. Next you can see water. Okay. Subramaniam house, they are getting water in this way with the help of the tanker, and tanker comes not on the regular basis. So we have discussed so many places where some people are wasting the water, some people are facing the shortage of water, some people become the sufferer of water, and some people are not getting adequate supply of the water. In the same country, we have taken the example of Chennai here also, but everywhere we are facing the same problem in our India. So let us begin the chapter, Water and People of Chennai. Senior government officials like Mr. Ram Gopal live in Anna Nagar, Chennai. This area looks lush and green with lawns maintained by a generous spraying of water. Bungalows here have tap water for major part of the day. On days when the water supply is inadequate, Mr. Ram Gopal speaks to a senior official whom he knows in the municipal water board, and a water tanker is easily arranged for this house. Again I am showing the picture of the Ram Gopal house to you. You can see this is like a bungalow. Okay? This is Ram Gopal's house. This is the place Anna Nagar, and you can see the bungalow. Easily they have the water supply. They are enjoying with the water. They are wasting the water. And if there is any problem, immediately they call because they have the sources. So they are getting water easily. You can have this point of view in your localities also. You can see chapter 14. They are not facing the supply of water. They have the adequate supply of the water. They have no shortage in their areas. So let us see, like most areas of the city, Subramanian's apartments in Mylapore suffers from water shortage. अब हमने दूसरा पिक्चर दिखाया सुब्रमण्यम का अपार्टमेंट की सिचुएशन दिखा रहे हैं जहाँ पे वाटर की शॉर्टेज है. दिस एरिया गेट्स म्यूनसिपल वाटर वंस इन 2 days. यहाँ पानी कैसे आता है? 2 दिन में आता है एक बार. अ प्राइवेट बोरवेल मीट्स सम ऑफ द रेजिडेंट्स वाटर नीड्स. प्राइवेट बोरवेल जैसे हम सबमर्सिबल खुदवा लेते हैं, सो सच बोरवेल हैज़ बिन देयर.
बोरवेल वाटर इज हाउ एवर ब्रैकिश. अब व्हाट डू मीन बाय ब्रैकिश का क्या मतलब होता है? ना वो वाटर पीने लायक होता है बेटा. दैट इज नॉट सॉल्टी एज द सी वाटर एंड दैट इज नॉट प्योर एज वी कैन ड्रिंक बिस्लेरी. तो दैट इज द बिटवीन. द ब्रैकिश जो पानी होता है ना तो नमक वाला ज़्यादा होता है पर वो पीने लायक नहीं होता. वी कैन यूज़ दैट ब्रैकिश वाटर फॉर द डिफरेंट पर्पजेज बट नॉट फॉर द ड्रिंकिंग. So the residents use it in their toilets and for washing only. For other uses, water is purchased from tankers. Water को खरीदते हैं लोग. Subramaniam spends up to 500 rupees or 600 per month on buying water from the tankers. For drinking water, residents have installed water purification system in their homes. और घर पे भी आर ओ सिस्टम भी सबके लगे हुए हैं और हर मंथ इनको वाटर के लिए ड्रिंकिंग वाटर के लिए दे हैव टू पेड. बेटा यहाँ ऐसी सिचुएशन आपको कहाँ देखने को मिलती है? दिल्ली में, जहाँ अपार्टमेंट्स है ना, दे आर नॉट गेटिंग द प्रॉपर और एडिक्वेट सप्लाई ऑफ द वाटर. दे आर गेटिंग द ब्रैकिश ऑफ वाटर. Next is Shiva. Shiva lives on the rent on the first floor of the house in Madipakkam and gets water once in 4 days. अब शिवा की कंडीशन तो मैंने आपको दिखाई थी, वो अपनी फैमिली को भी नहीं लेके आ पा रहा. द रीज़न इज़ दैट उसको पानी कितने दिन में मिलता है? 4 days के अंदर. Shortage of water in one major reason why Shiva cannot bring his family to Chennai. For drinking, Shiva buys bottled water. ठीक है, वहाँ उसके रूम में हमने आपको दिखाई थी 2 बॉटल रखी हुई थी. आई एम शोइंग द शिवा रूम्स अगेन टू यू. यू कैन सी दिस इज़ द रूम ऑफ द शिवा. ठीक है, तो यहाँ पर अपनी फैमिली को सेटल नहीं कर पा रहा जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ वाटर. नेक्स्ट वी हैव टू बी डिस्कस Padma. Padma works as a domestic help in Sadipet and lives in nearby slum. मैंने आपको बताया था डोमेस्टिक वर्क करेगा पद्मा और स्लम एरिया में रहती है. She pays a rent of 650 for the hutment which has neither a bathroom nor a tap connection. अब वो ऐसे कमरे में रह रही हैं जहाँ पर ना तो वॉशरूम है ना ही कोई टैप का कनेक्शन है. For 30 such hutments there is a common tap at one corner in which water comes from a borewell for 20 minutes twice daily. ठीक है, आप सिचुएशन देखो, ये ऐसे स्लम एरियाज़ में रहते हैं, छोटे छोटे कमरे बना रखे हैं इनके लिए और उनको एक ही टैप है. 30 हाउसेस के लिए एक ही टैप है और उसमें भी पानी कितनी देर आएगा बेटा? 20 मिनट्स. दिन में 2 बार आता है बट दैट इज़ फॉर द 20 मिनट्स ओनली. अ फैमिली गेट्स टू फिल ए मैक्सिमम ऑफ 3 बकेट्स विद इन दिस टाइम. अब ये 3 बकेट से कितना काम कर लेंगे? वॉशिंग कर लेंगी, क्लीनिंग करेंगी, घर पे यूज़ करेंगी, बेदिंग के लिए यूज़ करेंगी. सो दिस इज़ नॉट ए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर. द सेम वाटर इज़ यूज फॉर वॉशिंग एंड ड्रिंकिंग. वही पानी उसको वॉशिंग में भी यूज़ करना है, ड्रिंकिंग के लिए भी करना है. इन समर द फ्लो बिकम्स अ ट्रिकल सो दैट वन फैमिली गेट्स वाटर ओनली एट द कॉस्ट ऑफ अनदर. पीपल हैव टू वेट लॉन्ग आवर्स फॉर वाटर टैंक. और कई कई घंटों तक उनको पानी के लिए वेट करना पड़ता है. सो दिस वॉज द स्टोरी वी हैव बिगिन एंड वी हैव सीन इन द पिक्चर्स कि पीपल आर फेसिंग ए लॉट ऑफ problems in different parts of our country. There is a lack of shortage in different areas. You can see Padma's situation. इतने घर हैं, इतने बर्तन पहले ही लाइन में लग जाते हैं. They have to wait for their turn. When our turn will be there and we will get a fetch a bucket of water. So I hope you understood this introductory part of the chapter.